लैंग्वेजेस में अभी भी है, मराठी लिटरेचर देखेंगे या बंगाली लिटरेचर, आप जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली सी कि बहुत सुंदर काव्य लिखा जाता है. बट सो वी नीड टू पिक दोज अप अगेन, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, शेयर, और हम अपने बच्चों को भी आसपास के लोगों को पढ़ाएं, प्रोत्साहित करें उस तरह का साहित्य. उससे पहले हम खुद भी उसे खोजें दोबारा, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट and I hope that you definitely enjoy all of this. And please, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको कुछ पता है कि यार ये मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत मजा आया, कोई फेवरेट पोइट्री है इंग्लिश की जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, वो सब करिए शेयर. And I will be curating such quizzes and questions and activities for all of us here. Okay, thank you for these validations. And yes, another help that we would require from you is every month we'll be doing a session like this, and I don't want to be, आप बोर हो जाओगे मेरे को बार बार सुन के, राइट? तो एक ही शक्ल देख देख के. सो आई वुड लव इफ मोर ऑफ यू कैन कम फॉरवर्ड एंड टेक अप सेशंस लाइक दैट. सो व्हेनेवर वी अनाउंस दैट दिस इज द ऑथर ऑफ आवर month, our pick of the month, and if you really resonate with that and you have loved their works, please come forward and tell us कि यार I want to do this, मेरे को please आप ये दीजिए chance. And बिल्कुल don't be scared or don't be afraid. It's a platform which is very non-judgmental, and the idea is to get all of you to read, write and speak. और यहाँ पे हम सब बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा. और एज फॉर स्पीकिंग इज कंसर्न गाइज, मैंने स्कूल में डिबेट्स जीते हैं, मैं टोस्ट मास्टर्स में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स जीत के आई हूँ, मैं बहुत भाषण दे चुकी हूँ. तो मुझे ये बहुत मन है कि यू नो अदर पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग, और हम नर्चर करें इस तरह की स्किल सेट्स आप सभी के अंदर. ओके, और इसके बाद हाँ, अनदर, दिस इज समथिंग which is still a WIP, it's still a work in progress, but yes, along with this we will also start working on our first TBF newsletter. So आपके writing skills, आप कुछ भी लिख रहे हैं या आपने कोई, जैसे सौरभ, I remember you had presented a book review last year, right? So आप जिन्होंने भी book reviews present की है या जिन्हें भी करना, I think Jyotsna ji, you are yet to present your book review, it's going to come this week. So please start preparing the synopsis of your book reviews. We would love to feature all of the presenters into that newsletter, and lots of different ideas or thoughts or writings will come up with that. But I just thought to give a sneak peek into this. And now, so today we are celebrating Sir Arthur Conan Doyle's birthday. And I'll tell you, actually हमने अगर ये इस महीने से पहले शुरू किया होता तो our pick of the month would definitely have been Rabindranath Tagore, because रविंद्र जयंती आती है फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर में, बट यू नो वी स्टार्टेड इट अ लिटिल लेट एंड आई फेल्ट कि बैक नहीं जाते हैं. अगले साल भगवान हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और हम सब इकट्ठे यहाँ रहें, एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग ऑथर्स जो मिस हुए हैं इस समय. सो दिस टाइम आई फेल्ट सर आर्थर कोनान डोयल इज, I felt that this is quite cool. I also felt that this is a very different genre. हम सब बहुत high dose of wisdom पढ़ रहे हैं, बहुत है ना, काफ़ी सारे ज्ञान हम ले रहे हैं, तो कुछ काफ़ी light hearted सा कुछ हो जाए. और मैंने बहुत सारा fiction नहीं पढ़ा है, but I'll definitely tell you, Sherlock Holmes is one fiction that I have devoured like anything. Okay, और इसके पीछे जाता है एक childhood experience. I was in class 8th and मेरे CBSE textbook में द येलो फेस या फिर द स्पेकल्ड बैंड, आई थिंक द स्पेकल्ड बैंड एक स्टोरी थी जो चोटी से रिलेटेड होता है, दीवार से कुछ नजर आता है, वो रस्सी लगता है, लोग डरते हैं, मतलब ऐसा बहुत मिस्टीरियस था, वो बहुत क्विक स्टोरी थी. एंड आई वाज स्टडिंग इन अ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल. मैं क्लास 7 से हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, पेरेंट्स से दूर, एक दूसरे स्टेट में, मतलब पोल्स अपार्ट. जैसे हम कैलकाटा में रहते थे और मैं राजस्थान में पढ़ रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई याद आई और 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, घर चले गए, ऐसा नहीं था. तो but now I realize that was one of the best decisions my father had taken at that time. तो क्योंकि वहाँ जाने के बाद a very shy girl like me, जिसको टीचर के सामने बोलने में पसीने छूटते थे या कुछ, I turned into a, I mean, you can see the effect right now, right? So in class 8th, we read the Speckle Band, and our English teacher was incredible. And I would say a lot of you will agree that your English teachers have been amazing people, right?
आई एम श्योर बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, इंग्लिश टीचर्स या लिटरेचर के जो टीचर्स होते थे वो बहुत अलग आत्मा होती है, एक अलग सोल होती है उन लोगों की, क्योंकि वो इमेजिनेशन की एक अलग दुनिया में होते हैं. तो बहरहाल वी वेंट टू आवर होम फॉर वेकेशंस, समर हॉलीडेज, एंड माय डैड टुक अस टू पार्क स्ट्रीट, कैलकाटा का सबसे कूलेस्ट जगह है उस समय हुआ करता था. अब तो राजारहाट न्यू टाउन दैट हैज डेवलप्ड लाइक एनीथिंग. So we just went to that area, the Park Hotel में. Probably he took us to dinner that day, and it was very rare. हम साल में सिर्फ एक बार एक 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते थे. उसके अलावा बाकी पूरे साल भर में हम बाहर खाना वाना बहुत रेयर, मुझे याद नहीं कि हम खाया करते थे या हमें कोई क्रेज भी होता था कि नहीं. तो जस्ट द पार्क होटल के एकदम बगल में देयर इज एन ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, and today it has been converted into a kind of a coffee house. I would say a lot of bookstores have been converted more into a coffee house kind of a place, which is sad, right? But that time, it had a vibe. And imagine I was a 13-year-old little kid just going there for the first time of my life and looking at all those books. And my dad has been a voracious reader. और घर पे कबर्ड, लॉफ्ट, बेड के अंदर हर जगह किताबें, कपड़े, गहनों से ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं. कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं हम, इतनी सारी किताबें उठा के लेके जा रहे हैं. एंड माई मॉम यूज्ड टू फाइट विद माई डैड सेइंग कि यार मतलब ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हो. एस्ट्रोलॉजी की बुक, एंड माई डैड हैज read astrology and learned and become a pandit like that in this by reading. रीडर्स डाइजेस्ट के 50s के 60s के 70s के कलेक्शंस वो हुआ करते थे. एंड ही यूज्ड टू से, अरे बबली, माय नेम वाज बबली एट होम, एंड ही वुड से ये बड़े होंगे ये पढ़ेंगे, माय किड्स विल बी रीडिंग ऑल ऑफ दैट. एंड सो यस, माय ब्रदर एंड आई वी जोक कि हमें ना इनहेरिटेंस में आधी किताब तू ले लेना, आधी किताब मैं ले लूंगी. मतलब वी डेफिनेटली कीप जोकिंग लाइक दैट इवन नाउ कि वही हमारी इनहेरिटेंस है. माय डैड हैज अ ब्रिलियंट कलेक्शन, ओशो की सारी रेयर बुक. और नहीं, बंटी तो नहीं, बंटी मेरा कजन भाई का नाम है. आई हैव लॉट्स ऑफ नेम्स, चिनी, और मैं रिवील नहीं करी एक सेशन में. तो शर्लॉक होम्स की बुक के बारे में आए तो दैट डे एट द ऑक्सफोर्ड आई फाउंड a big fat volume of Sir Arthur Conan Doyle's Adventures of the Sherlock Holmes. Huge, बहुत बड़ी बुक. और वो छोटा बच्चा एकदम एक्साइटेड होके, अरे पाप, अरे मुझे ये वाली चाहिए, ये मेरे को लेनी है, वैसा. जबकि वो भाषा मेरे सिर के ऊपर की थी. बट आई डिड परचेज दैट बुक एंड आई केप्ट इट. और फिर मैं हॉस्टल चली गई. देन आई वुड कम बैक होम एंड years passed by and I did not read it at that time. But I started reading it when I was in my graduation. And I was using this book as a buffer in between my academic studies. Abnormal psychology, schizophrenia, disorders, ये सब पढ़ रहे हैं. बहुत overdose of too much होता है. DSM-4 के सारे diagnosis हम पढ़ रहे हैं ये सब. उसके बीच में बहुत relax करने के लिए मैं ये book पढ़ती थी. And I would also say it was very helpful at a time when I was going through a bad breakup. और अब लगता है यार बहुत अच्छा हो, भगवान बचा लेते हैं हमें बुरे एक्सपीरियंसेस से बाय ब्रेकअप्स, राइट. एंड रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस, हमें सही दिशा में ले आते हैं भगवान. उस समय हमें लगता है अरे दिल टूट गया मेरा, पंखे के लटक जाएंगे सब, एकदम पागल से ख्याल आते हैं. तो शर्लॉक होम्स पढ़ना जो था वो काफ़ी अमेजिंग और बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए उस टाइम पे. इट हेल्प मी नेविगेट एंड कम बैक टू माई इमोशनल सेल्फ एंड बी मोर रेजिलियंट. एंड वो फिक्शन, I was extremely fascinated by the kind of language that the author was using. Imagine 1800s के जो late era वाला no digital interface, मतलब वहाँ पे वो कुछ है ही नहीं. Digital interface तो खैर मेरे स्कूल कॉलेज टाइम में भी नहीं था उतना ज़्यादा. And I really feel कि बहुत अच्छा simple time था वो. तो वो लिटरेचर, वो पढ़ना, वो भाषा, वो एक्सप्रेशंस, ओ गॉड, आई वाज fascinated by that. I really loved that. और ये इंट्रोड्यूस करना इसलिए भी मैं चाहती हूँ ताकि आप भी उस चीज़ का सुख ले सकें. ओके, तो PDF मैंने शेयर किया था और ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हों, बट नाउ दैट यू हैव इट, प्लीज़ इंक्लूड इट इन योर लिस्ट ऑफ रीडिंग. एंड स्पेशली जब कोई, I think one of you were asking that, what should I do when I don't feel great, or I need higher dose of dopamine or web series ही देखने का मन करता है. I feel that's the time when readings like these can come really handy. इस तरह की रीडिंग आपको much needed dose of dopamine देती है बिना
वेब सीरीज या उस तरह के सेंसेशनल कंटेंट के ऊपर गए हुए, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, I think it's time to celebrate an amazing author like Sir Arthur Conan Doyle. He really created a legendary piece of work by introducing Sherlock Holmes, right? And he was born in Edinburgh, Scotland. और वो खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल थे, एंड आई डू फील वॉटसन का जो कैरेक्टर है, शर्लक होम्स का जो एड होता है, आप ब्योमकेश बख्शी भी अगर आपने देखी होगी तो ब्योमकेश बख्शी में अजीत का जो एक कैरेक्टर है, मतलब एक जो नैरेटिव लिखते हैं, सो वॉटसन प्लेज दैट काइंड ऑफ रोल. वॉटसन इज द वन हु डॉक्यूमेंट्स दी स्टोरीज अबाउट शर्लक होम्स. सो आई डू फील कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी कुछ गुणवत्ताएं वॉटसन के अंदर भरी है, right? So Watson is also a physician in that adventure series, right? And he really shaped the modern detective fiction considerably. आप डिटेक्टिव का नाम सुनेंगे और आप जो कर, अरे तू बड़ा शर्लॉक होम्स बन रहा है, मतलब वो एक इमेजिन की एक प्रॉपर नाउन जो है वो एडजेक्टिव बन चुका है, राइट? मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो एक विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो रही है. that quality has become, so yes, उपमा बनी जाती है, it's become a household name. Yes, wonderful, right? So you agree. आपके चैट्स पढ़ रहे तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ आप अभी हैं, आप सुन रहे हैं, still there, right? So despite his scientific mind, डोयल के कुछ एक्सपीरियंसेस या क्रिटिसिजम्स हैं कि वो थोड़े एक्सेंट्रिक थे और कुछ दिमाग हिला हुआ था, कुछ अजीब अजीब से चीज़ें भी आपको मिलेंगी, आप ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट हियर. उनकी लेगेसी में ये देखिए 60 से ज़्यादा शर्लक होम्स की स्टोरीज आई, जिनका बहुत सारा अडेप्टेशंस हुआ है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको रूपांतरित किया गया. एंड आई डू फील कि मूवीज जस्टिस नहीं करती इस लिटरेचर के साथ में. मतलब आप सीरीज ये सब बहुत सारा बना हुआ है, शर्लॉक अलग अलग नामों से बना हुआ है, पर वो मज़ा जो आप असल में इस एडवेंचर या स्टोरी को, जो बुक को पढ़ के जो आपको मिलता है, वो मूवी देख के नहीं आता. इस तरह के कुछ literary works हैं. There might be some works where the movie is better than the book, but I do feel for most of the cases the book is definitely much way better than the movie, right? Oh, अच्छा, wonderful. Sir, आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप दोनों पे भारी पड़ते हैं. You don't actually need Mr. Watson. You can play the dual role of both, right? So यहाँ पे मैं एक बार रुकती हूँ. I'll stop my slide here. We'll come back to this. I do have a game for all of you in just a moment. Can you unpin me, Palak, for a while? I would like to see everyone. Just a second. Yeah. Okay. आप सभी अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. हाँ. So I would really love to hear you. Have you heard about Sherlock Holmes? Do you have any experience? Have you read any of his work? And even if you've not read, please don't feel guilty कि यार मैं इतनी, मतलब कौन से ज़माने, क्योंकि यार मैंने नहीं पढ़ा, मैं कूल नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई ना कोई डिटेक्टिव स्टोरी या सीरीज आपने अपने कल्चर में पढ़ी होगी, तो डू शेयर अबाउट दैट. लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन. हाँ, उससे पहले शेर सिंह का काम कंप्लीट कर देते. लेट्स पोज फॉर अ सेल्फी क्विकली एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन. ओके, यस, ले लीजिए सर. रुमित सर, please switch on cameras. Done. Okay. Ready? Done. Thank you. डन. ओके, वीडियो ऑफ मत करिए, सिर्फ कैमरे के लिए पोज मत करिए. यस, बी हियर. सॉरी, you wanted to share, right? Actually, good evening everyone. When I was in 12th standard, so there was a course change only a year before, and the change in course was that out of 100 marks we will have 20 marks for, I don't remember exactly, 15 or 20 marks for a novel. So it was first introduced when we were in the 11th standard, and definitely it would continue for the next class. So in 12th standard we had the book Julius Caesar, the Hound of the Baskervilles. So earlier this was the first book of Sherlock series that I had read, and I think the only book that I've read.
First I was not very happy with the change in the course, because we there was an extra book in the curriculum. But as soon as I started reading it, uh, I could not stop reading. So it made me engaged. Plus the storyline and the characters are the thing that amazed me the most, uh, keeping in view that I had never read any literature. I was not a reader. The only books I used to read was my academics. So you can say that apart from the English course book or the Hindi course book that we had in literatures section, this was the first book that I've ever read, I think, as far as I remember. So the thing that caught my attention was the detailing, how the scene was described, the way the setup is described, the room, the expression are described, how the characters are described. It amazed me. And as Richa ma'am said that it's way better than the movie. I think when the book describes a character through words and we imagine it, this is the most beautiful thing about it. Because I think we are not able to observe as much when we are looking at the screen. The character just appears and we are not able to observe every part of it, every detail of it. But in the book, just one glimpse of the character could be described in one or even two paragraphs. So, and the story was such that it was mostly based in a grassland. I don't remember well if it was a grassland, but it was somewhat haunted, scary, and the way it was described, I loved it. And then later on, when I watched the Sherlock series of Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, so I loved the series. I have watched it 4 times and I can watch it again. But I was a bit disappointed with this episode, The Hounds of the Baskervilles. Maybe because I had read the book earlier, so I had high expectations, or maybe because it was not well directed or whatever. So that was my experience with Sherlock 2, the book and the series. Okay, lovely, lovely. And in fact, now you remind me that when there are so many adventures or stories to cover, तो वो जो विजुअल ग्राफिक होता है या इवन जो राइटिंग वर्क होता है, कहीं ना कुछ चीज होती है जो थोड़ी 19 हो जाएगी. So I think probably for you that was Hound of Baskervilles because you had read and you had something to compare with, right? But I really loved hearing your share. और कोई कुछ शेयर कर सकता है? मैम, आपने पढ़ा है? Yes, ma'am. Right. Yes. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? In my course book, I had read Sherlock Holmes, but presently I don't remember. Though I can recite a poem I had with me now. Should I recite it now? Okay. Just a minute. Sure, ma'am. This poem, a parable by Is your video Arthur. on? Ma'am, is your video off? I'm not able to look at you. Is it just me? आपने video? It's okay. Yes, I really love to see your beautiful face, your beautiful smile. Yes, please keep it on. Okay. So the poem, the title of the poem is A Parable by Arthur Conan Doyle. So it's a very brief and short poem, but with a very powerful message. It's a satire on human tendencies to engage in complex debates while overlooking the fundamental truths. So first of all, I recite the poem, then I'll little bit explain it. The cheese mites asked how the cheese got there. The cheese mites asked
how the cheese got there and warmly debated the matter. The Orthodox said that it came from the air. The Orthodox said that it came from the air, and the heretics said from the platter. And the heretics said from the platter. They argued it long and they argued it strong. They argued it long and they argued it strong. And I hear they are arguing now. But of all the choice spirits who lived in the cheese, not one of them thought of a cow. Of all the choice spirits who lived in the cheese, not one of them thought of a cow. So here the tiny creatures, mites, living in the cheese, they begin to wonder how their world came into existence. They engaged in a debate about the origin of the cheese. One group, the Orthodox one, they insisted that it came from air, like the divine creation. And the opposing group, that is heretics one, they said that it came from the dish. So different explanation both are giving, the Orthodox ones and heretics ones. But the choice ones who lived in the cheese as thoughtful beings, ironically, none of them considered that the basic source was the cow. So here Doyle mocks the absurdity of the over-analysis. People get caught up and overlook the simple truths. Thank you. Very nice, ma'am. Thank you so much. And I wanted this kind of involvement and participation from, all of you. And you brought this reading a work of this author today. Thank you so much. And you did it so beautifully. And we would love to see you more and more in our sessions. Yeah. Thank you. Surely. Thank you. Thank you. Anyone else would like to add or share your experience reading Sherlock Holmes? Jyotsna ji, Zainab, are you there? Rumit sir? If not, you could come forward later as well. So if not, Akshita, would you like to say something? नहीं? Okay, ठीक है. आपको कुछ बोलना हो तो चैट बॉक्स में लिख लेना and then I will invite you definitely. मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ शेयर करें. Okay. So friends, let us play a game. If it's possible, can we play a little game? And I know कि बहुत सारे लोग कहीं छुपे हुए हैं, कोई और जगह पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, so it might not be possible, but let's just try to give it a shot and let's do it just for quick 2 minutes. और अभी I know कि बहुत सक्सेसफुल शायद ना भी हो पाए हम, but आगे हम इसको बेटर प्लान करके स्कैवेंजर हंट खेला करेंगे, right? You need to leave. Okay, sir. Thank you. Goodbye. Really nice having you. Okay, we'll wrap up in a short while. Okay, so super interesting. I'll just give a few cues. इसमें actually 10 cues मैंने रखे थे, but सारे 10 हम नहीं करते. Let's try to do just 2 or 3 of these. Okay, so the first one, elementary, my dear Watson. Clue है और आपको कुछ लेकर आना है. Bring anything smart. चश्मा, notebook, calculator, कोई भी चीज जो आपके पास है. Just quickly go and bring. And show it here. Keep your video on, and I'm waiting for you all. Okay, yes, Susanna brought a calculator. Palak has a notebook. Okay, Akshita has a notebook. Very nice. Rumit sir is wearing one. Yeah, very nice. Swag. Sherlock Holmes जैसा swag. And हाँ, प्रिया ने कुछ दिखाया. Okay, lovely. Nice. Well, हाँ, मैम ने दिखाया. Okay, guys, आपको मजा आ रहा है? Would you like to play this game? Yes, this sounds like fun, right? Okay. तो चलो, मुझे लगता है ये मेरे को पहले कर लेना चाहिए था फिर. अच्छा, ये शायद हमारे पास ना हो क्योंकि आई अज्यूम कि हम लोग स्मोक नहीं करते. बिब्लियोफाइल्स बहुत हम हेल्दी कम्युनिटी है. होम्स नेवर लीव्स विदाउट हिज पाइप. तो सिगरेट दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एनीथिंग दैट इज ऑफ अ शेप ऑफ अ पाइप, अ पेन, स्ट्रॉ, सिलेंड्रिकल कोई भी चीज अगर आपके पास है. ओके, यस वी हैव पेन. थैंक यू सौरभ. पलक, ग्रेट. अक्षिता, आप भी पढ़ाई कर. ओके, प्रिया, यस आई सी यू.
ज्योत्सना, हाँ आई सी यू, हाँ यस मैम आई सी यू, ओके। अरुमित सर, वाओ, बाकी लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, बट आई एम श्योर बाकी सारे लोग भी कुछ कुछ लेकर आए हैं। जैनब को मैं देख नहीं पाई फॉर सम रीजन, बट आई एम श्योर जैनब आल्सो मस्ट हैव शोन। अब हाँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो ग्रेट, ओके। सो हाँ, मैंने अपना विजुअल्स थोड़ा सा और वो किया सो दैट आई कैन सी मोर पीपल, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके। सो दिस इज अ 3 पाइप प्रॉब्लम, सो समथिंग दैट इज अ रिलैक्सिंग और अ थिंकिंग आइटम, tea, candle, cozy blanket, anything that is cozy or comforting, even a soft toy might do. Something that just gets you feeling very relaxed, okay? Yes. A pillow will work. Pillow will do, हाँ, pillow will work. अच्छा, ज्योत्सना जी भी ले आई है, अरे वाह, lovely. A pillow. बहुत, हाँ, अक्षता is showing a handkerchief, Fairy. right? Wow, I love this. ये क्या है? Pink Slip pink सा toy. Jigglypuff. अरे बहुत ही सुंदर है ये। अरे रुको, पलक, आई थिंक इसका हमें इमेज ले लेना चाहिए। नहीं, Yes, Fairy please is the take a Jigglypuff. selfie. I love Jigglypuff. Yeah, so, Richa, please Okay. stop sharing your screen. We will take a selfie. Screen, Saurabh ji, you're on laptop. Can you take a हाँ, selfie? okay, just I took a screenshot as well. अभी भी दिख रहा है क्या प्रेजेंटेशन? नहीं, Yeah. हाँ. Ready, everyone? Okay. Wow, I love that panda. मैं आ रही हूँ ज्योत्सना जी, आप दिल्ली में ही रहते हो, right? I'm coming to your campus and take this, snatch this panda away from you. Okay, wonderful. हो गया photos? Yes. Done? Okay. So guys, हाँ, एक दो और खेल ले scavenger hunt. Right? Just a second. Okay. Can you see the screen? Yes, I can see it now. Okay. The next one, I think, हाँ, kitchen वाला मैं नहीं कर रही, kitchen नहीं भेज रही आप लोगों को. Mrs. Hudson, where's my violin? So anything that is musical, anything that gives you a music or a sound. And I know आप लोग बहुत smart हो, आप लोग कुछ बहुत quick करोगे, हाँ. So yeah, ये भी चलेगा, इससे भी तो हम म्यूजिक सुनते हैं. Exactly. ये चलता है, right? हाँ, TV, Priya, yes, that is great. Wow, Akshita has a bell, amazing. This is exactly what we're looking forward to. किसी ने कुछ बता लिया, सारे, हाँ, okay, fine. Okay, you make a point. Great. Rana was showing Bluetooth. Okay. Yes. Amazing. हाँ, ज्योत्सना जी का मैं फैन देख पा रही हूँ, तो आई डू अज्यूम कि हाँ, फैन भी म्यूजिकल है, आवाज करता है, साउंड करता है. ओके. और तो अब यू कैन सी कि क्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? यहाँ पे देखो, टाइम टू डिस्गाइज माई सेल्फ, हैट, ग्लासेस, मुस्टाश, इस तरह का ट्रेजर हंट हम, स्कैवेंजर हंट हम आगे क्यूरेट करेंगे. दिस इज लॉट ऑफ फन, बट आई थिंक लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट गेम. आई एम मिसिंग रेती मैम टुडे. If she had known that this is what we are going to do today, she would have surely been here, right? अब एक quick quiz करते हैं, and this is our last segment of today's session. So I'm going to ask a few questions, and let's try if you can answer those, right? और आप chat box पे भी लिख सकते हो, और एक साथ सारे unmute हो जाओगे तो फिर वो बहुत chaos हो जाएगा. So you could just raise your hand, right? So what's the name of Sherlock Holmes' loyal friend and roommate? Okay, so yeah, I know that you know, Saurabh. Okay. Anyone else? Okay, Priya. Yes, that's Dr. Watson. Okay, I think it's best. हाँ, हम chat box use कर सकते हैं. Ask them to tell the complete name. नहीं यार, नहीं, अभी बस आज ये James पहला Watson. सेशन है, स्टार्ट John. पहला सेशन है. Okay. Okay. ठीक है. What address did Holmes famously live at? Sherlock Holmes का एड्रेस क्या था? मैंने दिया. Okay, great. Yes, ज्योत्सना जी. पिछले स्लाइड में था भी वो एक क्यू में. Sherlock Holmes का प्रोफेशन क्या था? Yes, yes, I really loved that. बहुत ज़्यादा मजा आया था मुझे देख के. That was amazing. What was Sherlock Holmes' profession? I think this is the easiest, right? Say. Yes, हाँ, Saurav.
Detective. Consulting detective. Consulting detective. Okay, wonderful. Great. Which was the okay? What instrument did Sherlock Holmes play? Did you know that Sherlock Holmes played an instrument? Yes. You do? Yes. What was it? Sort of like ukulele or violin. Violin, Okay. something he keep on his Okay. shoulder. And Ukulele is a good Violin. It was a violin, I think. instrument. It's a violin. Yes, it's a violin. Okay, great. Which was the first novel that introduced Sherlock Holmes? This might be a tough one, right? पहला नॉवल है, उसमें एक्चुअली में एनकाउंटर दिखाते हैं कि वाटसन शर्लॉक होम्स से मिलता है, शर्लॉक होम्स को देख के उसका क्या इंप्रेशन होता है, कौन सी सेटिंग में मिलते हैं, फिर एक वो था A Study in Scarlet. Okay. Yes. No, that was first or that was the first one. That's the one. That's the one. Okay. And last question है Arthur Conan Doyle tried to kill off Sherlock Holmes. True or false? Yes, he tried to kill off, but he had to bring him back because yes, nobody wanted that. Right? Okay, public pressure se वापस आ गए. So once again, my dear friends, quick answers for all of you. Name of Sherlock Holmes' loyal friend and roommate, Dr. John Watson. कौन से एड्रेस में रहता था होम्स? आपने बता दिया था, बेकर स्ट्रीट. होम्स का प्रोफेशन, सौरभ, वेरी वेल सेड. इंस्ट्रूमेंट वायलिन था. Which novel introduced Sherlock Holmes? That was A Study in Scarlet. सर आर्थर कोनान डोयल का जो ओरिजिनल प्रोफेशन था, खुद का भी फिजिशियन था जो वाटसन को बनाया उन्होंने. और यस, जो लास्ट का स्टोरी था उसमें उन्होंने किल किया था, पर पब्लिक आउटरीच बहुत ज्यादा हो गया था, तो फाइनली फिर वो दोबारा उसको जीवित करते हैं, ऐसा कुछ इवेंट मैंने पढ़ा. मतलब बहुत ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं, बट हाँ, आई केम अक्रॉस दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, this is a wrap. Just a few last questions from today, and I love your answers. I hope you enjoyed this quick session today. I have a question for you. Which clue from the scavenger hunt was hilarious or funny? Which was something that you really enjoyed or loved? अभी हमने खेला था जो गेम, उसमें से कौन सा वाला पार्ट जो था वो आपको बहुत कोजी वाला? यस, एब्सोल्युटली राइट. पांडा और टेडीज और क्या क्या. आपका फेवरेट डिटेक्टिव कैरेक्टर कौन है? इट कैन बी समथिंग अपार्ट फ्रॉम Sherlock Holmes as well. I don't have. Feluda and Hercule Poirot. Okay, lovely. Feluda. Yes. Sheldon Cooper. Oh God. Okay. Yes, lovely. Vyomkesh Bakshi also. Right. Wonderful. Okay. If you could ask one question to Sherlock Holmes, what would it be? You could type in the chat as well. Nice question. How to use oh wow, okay, interesting. Anything else? How can he think all this within a moment? Okay, lovely, wonderful. Which book is the most rare and where to find? Wow, now that's a bibliophile question. Okay, great, Rumit sir, lovely. Do you think that you would make a good detective? No, right? Okay. चश्मा है 1.5. चश्मे की जरूरत नहीं है. हाँ. I think Rumit sir might make a good detective. I do feel that he has some traits, some very analytical skills. I think हमसे ज़्यादा है. I think not in the conventional sense, but I think I'm already a detective because as a diagnostician, I have to play detective in order to diagnose patients and a lot of things. So we call ourselves Sherlock Holmes most of the time. Lovely, wonderful. Okay, and there are two more questions, but I think we can take it to our group and we can have discussions on this. So we'll wrap from here. Your favorite story or adaptation of Sherlock Holmes' adventure? If you would like to share anything, you could go back to the group
and share your responses. Or why do you think Sherlock Holmes is still very popular today? So I stop sharing. And my dear bibliophiles and friends, thank you for listening. Thank you for being here all this while. I do hope that you enjoyed this session. And before we wrap, I'd love to hear if any of you have any thoughts or feedback or any closing remarks that you might want to add or share. Yes, I would like ये to. वो मोमेंट है जहां आप थोड़ी बहुत तारीफ कर सकते हैं मेरी, अगर आपका मन करे. Yes, sir. Dumit sir, yes, please go on. Yeah, definitely, Richa ji, this was very innovative and participative type Indeed. lecture type नहीं था. So we all enjoyed and everybody is involved. आपने किसी को comfort zone में जाने नहीं दिया, सबको toes पे रखा है. So Amazing session. we look forward to such more programs and it was very unique and entertaining also. Thank you. Suman ji always comes with her skills are there in reading and she always surprises. Thank you, Suman ji. Thank you, Palak. Thank you, sir. Yes, Suman ji, आप कहना चाहेंगे कुछ? Any closing thoughts? Zainab, I'd love to hear from you. And Jyotsna ji, if you're there, I'd love to hear from you as well. Yeah, quickly, huh? And yes, Saurav, aap bhi, huh? Yeah, I want to say that it's really wonderful initiative. One way, our past, whatever we have read, it will be revised and paying homage to the great writers also. Thank you so much. Thank you very It much. was real fun, Richa, and thank you for bringing this. Concept भी अच्छा है और बहुत मजेदार बना दिया तुमने इसको बहुत. I feel like the initial years that I have not used to explore the literature, I think by this series of one author, 1 month will help me to explore and know about some classic literature. In that way, at least I'll know the names of the books, names of the works, names of the authors, so that I know where to look for if I want to explore some quality literature. Lovely. It was really nice, Richa. Like, it's been very long since I've read Sherlock Holmes. I was in again school. Unlike you guys, it's not long for me since I've passed school. So I still remember that I was in 9th standard. That I was in school and my library was shut down. Like, actually, we live in a village and the village schools don't have big libraries. It has a big library, but nobody reads and there is no library. In this session, what I'm taking back is I have a lot of books to read. I have a big list. But now what I will do, I will edit it out and I will put one book of, the literature and all these people who have been in the history, like Sherlock Holmes and everything. So I will put one book in between of those people, because I know it's not easy for me to commit ki I will read all those books and everything. But one book in between, two books. So at least that makes a difference for me. So that's my takeaway. Thank you very much. That's really beautiful and very happy to hear that, Zainab. And I'm sure you will do. You're one of the most inspiring and young members in our group, and full of wisdom, and I feel mesmerized at your skill set and talents, and you have a lot to offer. So I really look forward to you reading and checking out these authors and sharing your insights and contributing to these series as well. So thank you so much. And now for a wrap, Palak, please share amazing. your 2 cents and then we can close. Yeah. So a lot has been already said. I'll just summarize everything, I think. And first of all, thank you, Richadi, for such a unique and creative idea. It's a blast. Matlab super hit hai ye session. And the way you conducted the scavenger hunt and everything, it was awesome. Like, kudos to you. I would have personally also texted you कि क्या session लिया है आपने, seriously. And that Zainab also said, Saurabh also said कि लोग पूछते हैं which book to read and what to read. आपको book list चाहिए होती है ना. So this is your book list. She is providing you authors. You can search their work.
and buy a book and read them. Like ये पूरे साल भर की book list है आपके पास, and you have so much to read. Like and just read as much as you want. And it would actually pay homage, जैसे कहा सुमन जी ने भी. So you have the list ready, and all the classics are there. So as in the previous starting of the session, she said कि classics हैं. So it would be amazing to have all the classics by your side in your collection. So amazing. Thank you so much, Richadi. And yes, we're looking forward to every month, every session now. तो देखते हैं अगले मंथ कौन सा ऑथर है. एंड अभी भी आई थिंक ऑथर्स आर लेफ्ट, सो शील पोस्ट अबाउट देम, रिसर्च एंड रीड देम. या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग. थैंक यू एवरीवन. एंड दिस लॉट टू से, कहने का कोई अंत नहीं होता है, बट आई थिंक